वीडियो बनाई, मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑन मैंने Hi everyone, welcome back to my channel. Those who all are new, my name is Sonam Rajput and I make videos on makeup, travel, fashion, beauty, lifestyle and much more. In this video, we are going to create this look right over here that I've done on my birthday eve. Yes, 31st of May मेरा birthday था and I got so many compliments on my makeup, for my dress, for everything that I wore on my birthday. So yeah, I thought why not to share it with you guys, क्योंकि उस टाइम get ready with me नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के घर तैयार हुई थी. So that is why I'm just recreating this look so that you'll get to know कि how I created that look. So हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then do not forget to like, share and subscribe to my channel and hit that bell icon as well so that you won't miss any of the update of my new videos. So yeah, without wasting any more time, let's get into this video to create this look right. So makeup base में तो मैंने सबको कितनी बार बताया है कि आपको ज़रूरी है that you have to like first of all you have to take care of skin. अगर आपकी skin अच्छी होगी तो आपका makeup भी अच्छा होगा. So the first and the most important step is to prep your under eyes as well. That means to hydrate them, to like moisturize them. I'll just go ahead and try to moisturize my face along with my eyes and that's it. Right now for the moisturizer I'm using this Momsco Natural Whiter Rich face cream with vitamin C, B3, B5, E and hyaluronic acid. काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, स्पेशली फॉर दिस समर सीजन. सो मैं इसको अपने फेस पे तो लगाऊंगी बट अंडर आइज पे भी अच्छे से मसाज करूंगी. Now the second step is also the most important step. Right now I'm using this peach color corrector. I'm using this palette from Forever 52 Camouflage palette and if in case आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना I'll mention the links in the description box so you can check them out. Okay, so I'll use this peach corrector क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा discoloration नहीं है. I personally like to blend it with my fingers only क्योंकि फिंगर की वार्मथ से बहुत अच्छे से blend हो जाता है. दूसरा कि हमारे fingers जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करती हैं एंड ट्रस्ट मी ये वैसे पैलेट बहुत वर्सेटाइल है एंड या ये शायद आपको मेरी स्क्रीन पे लाइट लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, शायद लाइटिंग की वजह से, बट दिस इज पीच इन कलर. Now we are going to actually conceal our under eyes. So you can take any of your concealer which is exact your skin tone or maybe one shade lighter than your skin tone. Now take any of your blender and try to blend it with. Now our fourth step is to set it up with the compact powder or with the loose powder. But first I'm going to lightly set it up with the compact powder. For the compact powder I'm using this My Glam Super Serum Compact. बहुत हल्के हाथ से I'll just try to set it up क्योंकि इसके बाद हमने थोड़ा सा लूज पाउडर से भी सेट करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आएगा इसके बाद जो इसको बनाएगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, विच इज़ दी मेकअप फिक्सर. येस, दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर, वेरी गुड, वेरी अफोर्डेबल एज वेल. I'm just spraying it on my beauty blender a little bit. You just have to dab it on your under eyes. I'll just try to cover my dark spots or redness or any acne marks with the darker concealer or the orange darker concealer. So you might get shocked कि मैंने अपना पूरा full face of makeup किया था with this single palette only. Yes, you heard it right. ये इतना ज़्यादा versatile है कि I am seriously loving this. So I'm using these two shades as my foundation shade. So I'll just apply it all over my face. If you have this palette, you don't need anything else. Trust me. I'll just apply it all over my face. I'm sorry, I forgot to mention my primer. मैंने primer नहीं use किया. I'm just using this makeup fixer as a primer. मैंने इसको 2-3 बार अप्लाई करके देखा है एंड ट्रस्ट मी आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी if you have this makeup fixer. And I'm just
blending my foundation or concealer, you can say, well, with my damp beauty blender. I'm just filling out my brows. बहुत ज़्यादा convenient सी है. Just like as the if in case you are a fan of L'Oreal eyebrow pencils, तो ये उसी का dupe समझ लो. This one is very good. मैंने अपने बर्थडे पे करी थी siren eyes. If in case you don't know, कुछ ऐसे लिखते हैं. And this is what we are going to create right here. Okay, so foundation is done. I'm using the same palette and I'll try to contour my full face with this palette only. So I'll just try to contour my forehead a little bit, my cheekbones, थोड़ी बहुत nose, and jawline सबसे ज़्यादा important. If in case आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो do check my Instagram as well, क्योंकि मेरी सारी फोटोज़ वीडियोज़ ऑफ माई बर्थडे वहीं पे है. I'll just try to blend my contour with my beauty blender again. Actually मैंने siren eyes रखी थी. मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक बोल्ड सा लुक चाहती थी. So it was all black. तो बहुत ज़्यादा क्यूट सा लुक नहीं चाहिए था. I was looking for a bronze kind of makeup जो बहुत ज़्यादा चिजल सा लगे. एंड कि पूरा ब्लैक थीम था तो बहुत ज़्यादा पिंकी लुक नहीं चाहिए था. तो बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा. आई एम जस्ट यूजिंग दिस क्रीम ब्लश. बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा यूज़ करूँगी. उसको अच्छे से लिफ्टेड इफेक्ट का चाहिए था मुझे. सो आई एम जस्ट यूजिंग इट इन द अपवर्ड मोशन. And then I'll just set it up with the powder. I'm just going to set everything up with the loose powder ताकि मेरा जो base है बहुत ज़्यादा long lasting रहे. And I'll apply it on the areas where I sweat too much. और जो भी एक्सेस होगा आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे, जो भी मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पे एक्सेस होगा, I'll just try to set my other like parts of my face. Let the loose powder set for at least good 5 minutes. Until then we will go ahead and try to do our eye makeup. For the eye makeup, I have used this single palette only, which is from Wet n Wild. This is my favorite one. This is the third palette I'm using. ये बहुत ज़्यादा versatile है और मुझसे बार टूट भी जाता है. देखो ये वाला जो इसका सेक्शन है ना, ये मुझसे टूट गया फिर से. But I'm just using this brown shade right over here, which is the lightest brown shade. So I'll just try to blend it on the outer V of my eyes a little bit. बिल्कुल हल्के हाथ से करूँगी. And I'll do it on the inner V as well. मैंने साइरन आइज करी थी बट बहुत चिजल्ड वाली नहीं, मतलब थोड़ा सा कॉर्नर में भी रखा था मैंने. बिल्कुल हल्का सा करना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, क्योंकि वी विल इंटेंस इट थोड़ी सी देर बाद. I'm just using this fluffy brush and I'm just trying to figuring out हल्का सा मिडल पे छोड़ देंगे ताकि मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगे. एंड या एक आउटवर्ड मोशन में आपको ब्लेंड करना है ऊपर की तरफ ताकि आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगे. आई विल डू द सेम ऑन अदर आई एज वेल. inner corners पे and outer corners पे. Now I'll take a small blending brush. ये थोड़े से गंदे हो रहे हैं क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक और लुक क्रिएट किया था. So I'm using this shade which is the orange brick shade. उसके बाद ये दोनों को शेड को मिक्स करके I'll apply it. एक ग्रेडियंट सा इफेक्ट लाना है हमें ताकि ऐसा लगे कि डार्क टू लाइट में जा रहे हैं हमारे ब्राउन के शेड्स. सो दैट इज वाई जो भी थोड़ा थोड़ा बच रहा है वो मैं इनर कॉर्नर्स पे भी लगा रही हूँ.
एक्चुअली मैंने उस दिन लेंस वेयर करे थे बट वो डेली वेयर थे, तो वो वाला लेंस अब है नहीं। एक्चुअली में है बट वो डेली वाले थे, सो आई एम नॉट गोना वेयर देम अगेन। I'll do the same thing on the other eye. Okay, we are done. Now I'm going to take this darkest shade of brown and I'll just place it with the help of this pencil brush, ताकि सिर्फ एक जगह पे लगा पाए। बहुत ज़्यादा नहीं इसको ब्लेंड करना है, सिर्फ उतना ही जितना हमारा, जैसे हम स्मोकी लाइनर क्रिएट करते हुए लगाते हैं, तो हल्का सा अपने इनर कॉर्नर्स में भी। I'll just try to apply a kajal on my waterline and on my lower and upper lash line both. Try to apply a liner, a very sharp wing eyeliner. साइरन आइज में बहुत ज़्यादा थिन आईलाइनर अप्लाई होता है एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इट थिन एज वेल। तो बहुत ज़्यादा शार्प सी एक एज होनी चाहिए ऑफ योर विंग आईलाइनर। Okay, so we are done with our liner and I'll just try to smoke out my lower lash line a little bit. Try to use those same brown shades on my lower lash line as well with this flat blending brush. Always try to blend your lower lash line with any lighter color or any color that you have applied on the upper like on your lids. I am just applying this lighter shade in the middle part of my eyes to make my eyes more bigger or to make them awake. जब आपकी eyes का inner part like the middle part जो बहुत ज़्यादा like दिखे, वो आँखें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। From the same palette I'm just highlighting a little bit on my brow bones, my inner corners, and that is it. And now I'll quickly apply my lashes. Lashes मैंने बहुत ज़्यादा dramatic नहीं लगाई थी, बहुत ज़्यादा मतलब normal सी लगाई थी कि बहुत ज़्यादा subtle भी ना लगे पर बहुत ज़्यादा bold भी ना लगे। Okay, so I'm back after applying my lashes. Just wanted to add one thing, मैं अभी भूल गई हूँ, मैंने अपने birthday के टाइम पे अपने upper lash line पे भी black कलर से थोड़ा सा स्मोक आउट किया था, अभी मैं भूल गई हूँ बट इट इज़ नॉट लुकिंग बैड, इट इज़ स्टिल लुकिंग गुड। बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने अपने सिर्फ आईलाइनर को स्मोक आउट किया था, तो बाकी जो डिफरेंस है वो मेरे लेंसेज का है, बाकी एवरीथिंग वाज सेम। अब एवरीथिंग जो भी मेरे मेकअप पे मैंने बेस लगाया उस सबको हटाने की बारी आई, मतलब कि डस्ट ऑफ करेंगे जो भी एक्सेस लूज पाउडर था उसको, एंड जो भी एक्सेस होगा वो अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर देंगे। And then I'll try to apply the powder blush and bronzer. पाउडर ब्लश और ब्रॉन्जर में मैंने क्या किया था, इन दोनों ब्लश और ब्रॉन्जर दोनों को मिक्स करके लगाया, क्योंकि मैंने बताया मेरी सब कुछ पूरा ब्लैक ब्लैक था, तो आई डोंट वांट कि ज़्यादा पिंक हो जाए, तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके लगाया, थोड़ा ब्लश वाला इफेक्ट भी आ जाए और थोड़ा ब्रॉन्ज वाला इफेक्ट भी आ जाए। सो दैट वाज इट। और बहुत सटल सा मैंने हाईलाइटर इसी सेम पैलेट से लगाया था, एंड yeah, you can see आज सबको सेट करने के लिए I'm using this makeup fixer again. And this is how my makeup was looking at that time. Of course lenses can make a huge difference and
we are left with our lipstick only. For the lipstick, I've used this nude shade, which is the 20, which is in this one is from Swiss Beauty. This is in the shade 22 Real Nude. Actually, this was a gift from my best friend. मैंने पूरा लुक अपना न्यूड ही रखा था तो इसको हल्का सा ना आउटलाइन करूँगी विद द डार्कर शेड ऑफ ब्राउन. Okay, so this was the whole look that I've created on my birthday, and yeah, I'll just quickly change my dress. And so this is the final look that I've created for my birthday, and this is how my under eyes looks like. And trust me, ये पूरा दिन नहीं हटेगा if in case you are going out in this summer season. Well, I was on my birthday eve और हमने काफ़ी डांस किया है 3-4 घंटे नॉन स्टॉप, and trust me, कहीं से भी मेरा मेकअप खराब नहीं हुआ, नॉट इवन माई फ्रेंड्स. एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस. एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.